फिल्म मेरे लिए सक्सेस ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਇਟ ਔਰ ਲੀਵ ਇਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਸਰਟਨ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਹੈਪੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮੀ। ਹੁਣ मेरी पर्सनैलिटी जो भी है, मेरी फैमिली जो भी है, आई लिव लाइफ फ्रीली। मुझे लगता है फेम में और बदनाम होने में फ़र्क है। तो आप किसी को डाउन करके आप व्यूज ले रहे हो, that's of no count. और वो भी मतलब कोई भी moral police बन रहा है आजकल, मतलब what, who made you this? And if we come to the controversy, I would just tell you, it really takes heart to read the comments and see. And sometimes I feel like कि मतलब इतने समझदार लोग हैं, they can just go and check what is right and what is wrong, but चल रहे हैं बस। इस पॉइंट पे एक चीज़ है, think, watch, analyze before stepping into anything. Do you consider culture or you're just dragging everything in? So everybody should be little thoughtful before speaking. And if it comes to, we have literally full-time work, emotionally, mentally, we are not in the space to entertain people or whosoever just coming and sitting in front of mouth and saying mic and saying anything. First of all, we don't have time. But if they get to nerve, I think all the actors or all the people should just get together. Yes. That's the only solution I feel. That's true. मैम आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में, कैसे लगता है कि कैसे इवॉल्व हुई है इंडस्ट्री हमारी पंजाबी? इवॉल्व तो बहुत हुई है और हो भी रही है और होगी। एंड वी वेरी मतलब यंग इंडस्ट्री, और जो भी हमारी ग्रोथ हुई है बहुत कम समय में हुई है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। ਤੁਸੀਂ अगर अपने यंगर सेल्फ में देखते हो, अगर तुम्हें एडवाइस देनी होगी अपने यंगर सेल्फ में, इंस्टाग्राम पे फैंस आर सो एक्साइटेड अबाउट दैट। Yeah. करण औजला के साथ जो है बच्चे Yeah. व्हाट्स इट अबाउट व्हाट्स कुकिंग, थोड़ा सा दिस दो। So Karan is coming with his new album, and we are beginning together for that. So yeah, you'll be part of it. yes, definitely. So that's the it's no more suspense, but yes, that's the happy part. leave it to suspense? We never wanted to. We were excited too. हमारे साथ मौजूद है पंजाबी सिनेमा का एक पावर हाउस, पंजाबी पूरा ट्रियो यहाँ मौजूद है। द एवर टैलेंटेड तान्या, नीरू बाजवा एंड हमारे राइटर जगदीप सिद्धू जी। पहले तो सारे ने मेरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी। जी। ਤਾਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਨੀਆਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਯੂਨੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਰ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੀਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੀਰੂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਓਜੀ ਕੁਈਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੋਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀ? ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਆ, ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਆ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਐਂਡ। ਬਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਲਮ। ਐਂਡ ਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਸੋ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਫॉर मी इन दिस फिल्म। तान्या, आप भी नीरू मैम के साथ पहली बार काम कर रहे हो। Oh, How she's was the the dream experience? girl, you know that. Of And course. and everybody just want to work with her, and I'm blessed enough that I got a chance to work with her. And first day when I went to the shoot, I was just looking at her. I was very grateful. I wasn't scared, but I was so mesmerized looking at her that, oh my god. And I've told this before also, and she's gem of a human being. तो ऑन सेट की भी जी मस्ती हो गई थी। On set na, she made me so comfortable that I can at least perform, which is a very big thing, because she's the Neeru Bajwa, she's star of the cinema, and to get that space to perform is like a real thing. Usually you don't get that with stars, but I'm really happy and really blessed. जगदीप सर, दो लीड एक्ट्रेसेस विदाउट एनी मेल काउंटरपार्ट, किथों आइडिया आया? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਵੈਸੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। ਦੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਰੂ ਮੈਮ your journey from Vancouver to ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ to Mumbai then ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਸੀ वो स्ट्रगल तो अज भी चल रहा ऑनेस्टली सो मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया हैज़ मेड मी हु आई एम टुडे सो हर एक्सपीरियंस मेरे लिए आई थिंक हैज़ बिन पॉजिटिव एंड अ लेसन ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਸੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਯੂਰ ਡਨ ਯੂਰ ਨਾਟੀ ਗੋ ਸਿਟ ਐਟ ਹੋਮ ਸੋ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਯੂ ਚੇਂਜਡ ਵਾਟ ਹੈਵ ਯੂ ਡਨ ਦੇਰ ਸਮ ਅਦਰ ਗਲੋ I don't know, एक अलग confidence आया. Yeah. Tanya, in Sufna, Yeah. you were being elevated to the level of national crush. Yeah. तो हजे तक कोई गल याद है ऑडियंस ले या ऑडियंस फैंस रिएक्शन जो मिला तो थोड़ा लगा like stays still in your heart. Every moment is in my heart because this is something that I've always dreamt of. I always wanted to be an actress, and every moment that somebody appreciate me for my work or someone comes and tell me that, oh my God, we loved your character, we loved your craft. So every single word is here. Even I have the letters that they have given me. I have the flowers that they have given me. I have a box in the house. I take everything and I keep the memories. And then when I'll get old, I'll open and I'll just see everything. ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ओल्ड एक लड़की का जो रोल निभाया Yeah. तो मतलब अभी इस टाइम पे एक मॉडर्न माइंडसेट को फॉलो करते हो ओल्ड वाली लड़की कहीं पे कहीं है I think with every passing day na actor gets fine in the craft because उसके खुद भी life experience बहुत बढ़ते हैं. But this character is like different from all the characters that I've done so far. This is watch the film. This is different. This took so much of my energy. All the characters before were like little decent, calmer, but this one is like too loud. ਹੀਰੋਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਇਟ ਔਰ ਲੀਵ ਇਟ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ you have to follow a certain stereotype and I realized I was very unhappy because that wasn't me ਹੁਣ ਮੇਰੀ personality ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ family ਜੋ ਵੀ ਆ I live life freely तानिया हमारी ना लाइफ में नॉर्मल सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो चढ़ाता भी उतनी जल्दी है और उतारता भी उतनी जल्दी है अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हुई थी यू नो दैट तो आप कैसे टैकल करते हो जैसे आज़ादी मेरा ब्रांड की कंट्रोवर्सी बट सोशल मीडिया के क्रिटिसिज्म हम कैसे टैकल करते हैं Some people again started it and somewhere I feel like we actors have way more work to do. Like 16 hours almost every day on set and then we are doing dubbing, then we are managing shoot and then we are promoting the film. So first of all we have no time to entertain people who are just sitting and speaking their mind out. But if it gets too extreme, I think everybody should take some certain actions and especially when you are not at fault. But I would just say that people, because social media is good and equally dangerous as well. So I think people who are speaking, if they are speaking unknowingly, those who are printing that should also take care equally. Because so they are equally at fault if they're not correcting it or if they're just for views or for fake purposes or just to get fame. तो मुझे लगता है फेम में और बदनाम होने में फर्क है. तो आप किसी को डाउन करके आप व्यूज ले रहे हो that's of no count. और वो भी मतलब कोई भी moral police बन रहा है आजकल मतलब what who made you this and if we come to the controversy I would just tell you it really takes heart to read the comments and see and sometimes I feel like कि मतलब
इतने समझदार लोग हैं, they can just go and check what is right and what is wrong, but चल रहे हैं बस. इस पॉइंट पे एक चीज है, think, watch, analyze before stepping into anything. That's very important nowadays. और जैसे रील स्क्रॉल करते हैं ना, माइंड का स्विच स्क्रॉलिंग पे ही लग जाएगा. they'll never be able to make any decisions. It's very scary also क्योंकि जो सोसाइटी की mindset है for a female, what they write is like, it's shocking कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, मतलब how openly, freely, and it's all men, and it's like, oh my God, are we still stuck there? Yeah. So we have a lot And of work to many do. times this has also happened, that they'll say ki, like, our culture, our thing. I'm not talking about only Punjabi, throughout that our culture. When you speak something ill about other people, where do you consider culture, or you're just dragging everything in? So everybody should be little thoughtful before speaking. And if it comes to, we have literally full-time work, emotionally, mentally, we are not in the space to entertain people or whosoever just coming and sitting in front of mouth and saying mic and saying anything. First of all, we don't have time. But if they get to nerve, I think all the actors or all the people should just get together. Yes. That's the only solution I feel. That's true. नीरू मैम, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में, कैसे लगता है कि कैसे इवॉल्व हुई है इंडस्ट्री हमारी पंजाबी? इवॉल्व तो बहुत हुई है और हो भी रही है और होगी. एंड वर वेरी, मतलब यंग इंडस्ट्री, और जो भी हमारी ग्रोथ हुई है बहुत कम समय में हुई है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट. आई एम सो प्राउड ऑफ इट. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ, ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਗੀ? गिव अप तो मैं कीता नहीं, मे बी जस्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन. इट्स ओके, घबराया ना कर इतनी जल्दी. सब ठीक हो जाओ. ਜਗਦੀਪ ਸਰ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ OTT ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੈਟਰ ਇਸ पे रिलीज करना चाहिए. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे तो लगता है कि जो थिएट्रिकल फिल्में हैं वो अलग रहनी चाहिए और OTT का कंटेंट अलग रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं OTT का जिस तरीके का आजकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है फिल्मों में, तो वो सिनेमा को खराब करता है. सो एक कैलकुलेशन के हिसाब से फिल्म बनती है. जब आप कैलकुलेशन में पड़ जाते हो तो फिर अच्छा प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो मुझे लगता है दोनों डिफरेंट हो, जैसे आमिर सर ने किया तो बेटर है. OTT मॉडल, द YouTube वाला YTT. यस. तान्या, हमने ना अभी रिसेंटली देखा था आपके इंस्टाग्राम पे, फैंस आर सो एक्साइटेड अबाउट दैट. Yeah. करण औजला के साथ जो है पिक्चर, Yeah. व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स कुकिंग, थोड़ा सा दिस दो. So Karan is coming with his new album, and we are beginning together for that. So, yeah. you will be part of it. Yes, definitely. That's So that's the it's no more suspense, but yes, that's the happy part. leave it to suspense. We never wanted to. We were excited too, more than the fans. We were like, okay, we are coming together after 5 years. Let's post it. So, कोई एक सीक्रेट विश हो रहा है एक एक्ट्रेस ਨਾਲ काम करने, बॉलीवुड एंड की होगी? I really want to share screen with Alia Bhatt. I feel like her craft, her command on her craft, her dialogues, her delivery, her confidence level, and the way she takes acting or her mindset, I think that's different because it's not easy. The role, and I'm literally fan. I'm pretty sure whole India is fan of that Gangubai, and the age that she played it, and the maturity and the versatility that she just portrayed on camera. It's mind blowing, and I think She's amazing. I would learn so much. मेरे मन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अगर सीक्रेट विश हुए जब अलग अलग तक पूरी हो? ऐसे संजय दत्त जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਆ. Yeah, thank you so much and all the very very best for your film. like टाइटल सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. वैसे एक ਗੱਲ ਹੋਰ कि हिंदी हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको टाइटल समझाना होए तो कितना समझाओगे? जगदीप जी, हाँ, he can describe best. चंट चला के खेल. I said you will describe best, and you said तो मैं भी कह तो कोई भी कह खत्म रहा करता है. हाँ, उसमें क्लियर हो गया. चुगलियां करनी, जो चुगलियां बहुत करनी. बात इधर की उधर, बहुत शातिर. ओ फफड़े कुछ उन्होंने वो था शातिर. Thank you so much and all Thank the you. very very best for your film. Thank you so much. Thank you.